Hello everyone, my name is Mandira. Welcome to AglaSem, and today we are going to be studying class 10, chapter number 8, Challenges to Democracy. So ये एक last chapter है इस book का, and it's sort of like a mini chapter. इतना लंबा chapter नहीं है, so this video will be quite short. But yes, let's cover this because it's still an important chapter. और इसमें से भी you can definitely expect questions in the actual examination. So yeah, let's talk about the various challenges that a democracy faces. Number one challenge की बात करते हैं, the very foundational challenge of a democracy. Foundational challenge का मतलब क्या होता है? Basically मेकिंग अ कंट्री डेमोक्रेटिक. ठीक है, वो पूरी की पूरी फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारे कंट्री ने करी, हमारी तो खैर डुअल स्ट्रगल थी बिकॉज वी वर ट्राइंग टू किक कॉलोनाइजर्स आउट एज वेल एंड वी वर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी. बट इन कंट्रीज फॉर इंस्टेंस नेपाल where there was a constitutional monarchy before and then lots and lots of struggles had to take place in order to establish a democracy. ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है about नेपाल. So that is the foundational challenge, democracy को actually लाना किसी country में. Number two is the challenge of expansion. This involves applying the basic principle of democratic government across all regions. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिटी एरियाज में डेमोक्रेसी और बाहर के एरियाज में अथॉरिटेरियनिज्म चल रहा है. You have to make sure that it is equally spread out throughout every village, every nook and corner of the country. Okay. Then there is deepening of the democracy. ये वही वाली बात है जब हम बात कर रहे थे कि पार्टी के अंदर जो रूलिंग पार्टीज हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, उनके अंदर भी कितनी डेमोक्रेटिक पावर है, या अगर एक या दो ही लोग हैं जो दे कीप मेकिंग डिसीजंस. सो दैट इज द डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. ओके, कि कहाँ तक डेमोक्रेसी इज डीपेंड. सो strengthening of institutions and practices of democracy. This should happen in such a way that people can realize the expectations of democracy, but ordinary people have different expectations from democracy in different societies. ठीक है, therefore this challenge takes several meanings. तो किसी के लिए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, किसी और का इंटरप्रिटेशन कुछ और हो सकता है. यू हैव टू मेक श्योर इन एवरी लेवल ऑफ द कंट्री देयर इज अ सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, चाहे वो एक स्कूल इलेक्शन से लेके कॉलेज इलेक्शन से लेके कहीं पर भी हो, बट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी डीपन्ड. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, हाउ टू ब्रिंग अबाउट, हाउ टू टैकल दीज चेंजेस. ठीक है, इनके बीच में जो थोड़े टेबल्स गिवन है ऑन पेज नंबर 106, 107 एंड उससे पहले के दो भी जो पेजेस हैं, प्लीज आप उनको फिलअप कीजिए. एंड इफ देयर आर एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स एंड क्वेश्चंस, प्लीज कमेंट डाउन एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस. सो नंबर वन हम बात करते हैं रिफॉर्म में लीगल वेज ऑफ रिफॉर्मिंग पॉलिटिक्स. ठीक है, फॉर इंस्टेंस कोई लॉ बना देना जिससे कि पॉलिटिक्स विल अपीयर टू बी क्लीनर और बेटर. ओके, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस? जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हो सकता है कि एनीवन विद अ क्रिमिनल रिकॉर्ड will not be either they have to declare their criminal record or they will not be allowed to contest election. ठीक है, तो क्या होगा? People with a cleaner image, they will come and start participating in the elections. Number two, any legal challenges must be well thought of. Like यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है that 2 से ज्यादा जिनके बच्चे हैं, ऐसा लॉ बना दिया गया है कि उनसे ज्यादा, अगर 2 से ज्यादा किसी के बच्चे हैं, then they will not be able to participate in the election. ठीक है, तो in order to curb the population control, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ठीक है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ये एक अच्छा मेजर है, बट इसमें कितने सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स, डिजर्विंग वुमेन हु हैड बीन स्ट्रगलिंग फॉर द पास्ट सो मेनी इयर्स इन दैट एरिया, हु आर वेरी पॉपुलर इन दैट एरिया, विल बी लेफ्ट आउट. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट द लॉ डजंट हैव एनी काइंड ऑफ लूप होल्स. ठीक है. Number three is political reforms to be brought out by principally enough through political practice. तो सिर्फ लिखे लिखाए रिफॉर्म्स नहीं होने चाहिए, एक्चुअली पॉलिटिकल रिफॉर्म होना चाहिए. ऐसा ना हो कि लोग उसके लिए लूप होल्स ढूंढ रहे हैं, एक ये अच्छा चलो ये लॉ है ना, मैं इसके नीचे से निकल जाता हूँ तो मैं बच गया उस लॉ से. इट शुड एक्चुअली बी इन प्रैक्टिस. Number four, any proposal should think not about only what's a good solution, but about who will implement it and how. अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि पार्टी के जो फंड होते हैं, जो ये कैंपेन करते हैं, उस पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लगाने के कितने दिनों से लोग बोल रहे हैं कि यू शुड डू इट. बट सिंस इट इज नॉट इन द फेवर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी टू डू दैट, बिकॉज सबके सब अपना जिनसे पार्टी फंड लेते हैं उनको फेवर्स देते हैं, एंड अगर उन्होंने एक्सपोज कर दिया तो सब क्लियर हो जाएगा. कोई भी ये नहीं हटाएगा क्योंकि दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर देयर एग्जिस्टेंस. सो exactly how will you implement it? It is a good solution, but nobody will implement it because any party in power will not want that to happen. ठीक है, चाहे वो कोई भी कितनी भी शरीफ पार्टी हो.
So इसकी वजह से हमें we have to make sure that we are redefining democracy in a certain way. So which is the final chapter, final topic of the book, final topic of the chapter. The rulers elected by the people must take all major decisions. ऐसा ना हो कि प्राइम मिनिस्टर कोई और है और डिसीजंस कोई और ले रहा है, प्रेसिडेंट ले रहा है पार्टी का, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए. Elections must offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने पार्टी को वोट दे दिया तो फिर वो जीते ही जा रही है. जीते ही जा रही है means they are using some sort of unfair means to win and using their current power to win. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए. The choice and opportunity should be available to all the people on equal basis, women, poor people, everybody. ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को भी एक को exclude कर दिया. The exercise of this choice must lead to a government limited by basic rules of the constitutions and citizens' rights. So the government should basically realize that they are not an absolutist power, but they have to work within the means of the constitution. Okay. Now you may have noticed that in the course and discussions, certain aspects were discussed, and we have gone beyond the definition. Number one, we discussed democratic rights at length and noted that these rights are not limited to the right to vote, right to elections. हमने बताया था ना एक फर्स्ट चैप्टर में, जो भी हमने पढ़ा था कि is it enough कि अगर कोई वोट दे रहा है तो it is a democracy? No. Is it enough to have an election? No. The election can be rigged. Is it enough that leaders are popular? No. Sometimes they will elect themselves for life, है ना, जैसा कि केस था पहले भी. So we have learned that सिर्फ definition नहीं, उसकी interpretation में भी we need to find out if it is democratic or not. Power sharing is the spirit of democracy. तो अपने आप में centralization of power करना बहुत ही stupid चीज है किसी भी पार्टी के लिए. एक बंदे के हाथ में, दो बंदों के हाथ में power रखना, पार्टी की सारी influence रखना, that is not in the spirit of democracy. You have to share your power. Okay. We saw how democracy cannot be a brute rule of majority and how respect for minority voices is necessary for democracy. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो majority religion है या majority caste है उनके ही फेवर में laws आ रहे हैं या उनके फेवर में ही वो हो रहा है या acts of violence are happening against minorities, then it's not a democracy. Okay. Our discussions of democracy have gone beyond the government and its activities, and we discussed how eliminating discrimination on the basis of caste, religion, gender is important for democracy. Because democracy क्या preach कर रही है? Equal rights for everyone. So it should be equal rights for women also. It should be equal rights for people who have faced caste-based discrimination. Everything. ठीक है? तो फाइनली उन्होंने एक अच्छा सा एक एक्टिविटी दिया है कि योर ओन कस्टमाइज्ड डेफिनेशन ऑफ अ गुड डेमोक्रेसी. प्लीज लीव योर कमेंट्स एंड थॉट्स अबाउट दिस. मैं आपको बताती हूँ माय डेफिनेशन ऑफ अ गुड डेमोक्रेसी इज नंबर वन, वेयर एवरीबडी इज हैज अ डेफिनेटली अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अ मिनिमम सोर्स ऑफ इनकम. कोई भी ऐसा ना हो जिसके पास बिल्कुल ही खाने को नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही ज्यादा कि extremely rich. So my ideal democracy is where this gap is a bit less. Number two, my ideal democracy is where each and every person's right to freedom is respected. I can criticize the government freely. I can criticize anybody I want. Obviously, it has to be constructive and legitimate criticism. पर मुझे ruling party या government के against बोलने में डर नहीं लगना चाहिए. That is when I'm living in a democracy. Number three, I should be allowed to live wherever I want, travel wherever I want. That's definitely part of being a democracy, basically. And of course, practice my own religion, preach my own choices. Basically, the freedom of choice. As a woman, as a Muslim, as a Hindu, whatever you are, you should have the freedom of choice. So that to me is my definition of democracy, and you let me know what's yours in the comment section below. Do subscribe to the channel, and thank you so much for being on this journey with me. Today we finished class 12, and I really hope that you have found these videos to be helpful. I'll see you some other time, and I wish you all the very, very, very best for your 10th boards.